start. Since the order of dismissal takes effect when it is served, the dispute will also arise at the time and place of the communication of the dismissal order when the management communicated the order of dismissal at Chandigarh. The industrial dispute arose at Chandigarh stop. The employer's employee relationship was snapped at Chandigarh stop. Although the residence of the workman may not be the whole cause of action, yet it would be a part of the cause of action stop. According to the learned counsel, when different parts of the cause of action arose in different territories, the courts located in those territories would have concurrent jurisdiction, and it would be for the workman to decide as to where to seek the reference stop. Mr. Rana has further submitted that under Section 10 of the Act, appropriate government has to decide as to whether any industrial dispute exists or is apprehended. Stop. This objection to jurisdiction of the government making the reference has to be taken before the labor court to which a reference is made. Stop. The objection would be a part of the reference. Stop. Mr. Rana has also relied on a number of judgments in support of his submissions. Stop. I have considered the submissions made by the learned counsel for the parties. Stop. All the points raised by both the learned counsels are no longer res integra, and the same can be conveniently disposed of by referring to earlier decisions of the Supreme Court or the High Courts. Stop. In the case of Newspapers Limited versus State Industrial Tribunal UP and others, the Supreme Court has categorically held as follows. Stop. In spite of the fact that the making of a reference by the government under the Industrial Disputes Act is the exercise of its administrative powers, that is not destructive of the rights of an aggrieved party, to show that what was referred was not an industrial dispute at all, and therefore the jurisdiction of the industrial tribunal to make the award can be questioned, even though the factual existence of a dispute may not be subject to a party's challenge. Stop. State of Madras versus C.P. Sathe, 1953, SCR 334 at P 347, AIR 1953, SC 53 at P57. Stop. Thereafter, the Supreme Court in the case of National Engineering Industries Limited versus State of Rajasthan and others had
the occasions to deal with the proposition that the state government had no jurisdiction to make the reference stop. In paragraph 24 of the judgment, it has been held as under. It will be thus seen that the High Court has jurisdiction to entertain a writ petition when there is an allegation that there is no industrial dispute and none apprehended which could be the subject matter of reference for adjudication to the industrial tribunal under section 10 of the act. Stop. Here it is question of jurisdiction of the industrial tribunal which could be examined by the High Court in its writ jurisdiction. Stops. It is the existence of the industrial tribunal which would clothe the appropriate government with power to make the reference and the industrial tribunal to adjudicate it. Stop. If there is no industrial dispute in existence or apprehended, the appropriate government lacks power to make any reference. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शंस आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।